Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 11th January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the bird species count in Deepor Beel. Deepor Beel, you must have heard about it. It is basically a wetland in Guwahati city of Assam. तो यहाँ पे गुवाहाटी का जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन है ऑफ द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो दे हैव कंडक्टेड अ बर्ड स्पीसीज काउंट जहाँ पे कुछ फैक्टर्स जहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे रिवील हुए हैं सो वी लुक एट इट कि यहाँ पे कितना स्पीसीज के बारे में फाइंड किया गया है एंड हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम मीन्स इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पोएट्री कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. तो देखिए जो दीपोर बिल है ना, दीपोर बिल यू शुड नो इट इज द ओनली रेमसार साइट इन असम. ठीक है, अगर हम इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में देर आर 75 रेमसार साइट्स आर देर इन इंडिया. और नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली देर आर 4 रेमसार साइट्स. असम के केस में जैसे कि मैंने बताया इट इज दीपोर बिल. देन त्रिपुरा में यूल फाइंड द रुद्रसागर लेक, मणिपुर में यूल फाइंड द लोकतक लेक एंड मिजोरम में यूल फाइंड द वेटलैंड कॉल्ड द पाला लेक. रेमसार साइट इज बेसिकली आर दोज साइट्स व्हिच आर प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्डेड अंडर द रेमसार कन्वेंशन व्हिच वाज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जो कि 1971 में ईरान में साइन किया था बाय नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज जिन्होंने कमिट किया था टू सेव द वेटलैंड्स. अब ये जो करंट कंटेक्स्ट है तो यहाँ पे बताया गया है द गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इट हैड कंडक्टेड द सेकंड बर्ड स्पीसीज काउंट एक्सरसाइज आफ्टर फरवरी. तो देखिए जो पहला काउंट था दिस पर्टिकुलर गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन नाउ दे हैड ऑलरेडी डन फर्स्ट स्पीसीज काउंट इन फरवरी 2022. ठीक है, तो इस बार जो ये काउंट किया गया है तो दिस इज द सेकंड टाइम द काउंट हैज बीन मेड. और यहाँ पे जो डेटा है तो डेटा में यहाँ पे रिवील किया गया है दैट ऑल टुगेदर 26,747 बर्ड्स हैव बीन फाउंड व्हिच बिलोंग टू 96 स्पीसीज. ठीक है, तो ये जो नंबर्स है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स बट इफ यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर डेटा विद द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस डेटा तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट ईयर का जो यहाँ पे काउंट था तो यहाँ पे रिवील किया गया था दैट देयर वर 10,029 इंडिविजुअल्स अक्रॉस 66 स्पीसीज इन 2022. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो नंबर्स है प्लस द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ स्पीसीज एज वेल काफी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. सो दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव साइन एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द इफोर्ट द पॉजिटिव इफोर्ट ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज regarding the Deepor bill, right? So the bird count revealed greater species diversity and an increase in the total number of species. Now, if we talk about the Deepor Bill, it is one of the largest freshwater lakes in Assam and a very important bird area by the BirdLife International. So Deepor Bill जो है, it has been designated as a Ramsar site in November 2002. देखिए, so currently as I told you, India के केस में there are 75 Ramsar sites are there और अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में तो there are 4 are there. ठीक है, तो ये जो Deepor Bill है इसे designated किया गया था as the Ramsar site in the year 2002. It is located towards the southwest of Guwahati city of Assam and it is the erstwhile water channel of the river Brahmaputra. The lake expands up to 30 square kilometer in summer. So you must be knowing that summer season in India it is this time of the season of the southwest monsoon. तो जहाँ पे बारिश काफ़ी होता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है. तो यहाँ पे जो expanse of this particular wetland it increases in summer that is 30 square kilometer and it reduces during winter to about 10 square kilometer. The Assam Forest Department manages the 4.1 square kilometer Deepor Beel Wildlife Sanctuary. So you should also know that this particular Deepor Beel जो ये wetland है तो इसी के अंदर में एक 4.1 स्क्वायर किलोमीटर का एक Deepor Beel वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है in the central part of the greater wetland name of the Deepor Beel. Now if you look at the importance of this particular Deepor Beel तो यहाँ पे तो see the thing is that not just this particular wetland but every wetland you will find they are the powerhouses of flora and fauna. ठीक है, number of you will find there are powerhouses of number of species of both the flora and fauna यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, इसमें डिपेंड करता है. ठीक है, so this is the reason why they are quite significant for us. So it constitutes a unique habitat for aquatic flora and avian fauna. It has both biological and environmental importance besides being the only major stormwater. So stormwater you must be knowing it is also called as water that originates from precipitation. तो बारिश से जो पानी जो आता है इसी को storm water कहा जाता है. तो precipitation you must be knowing it is known as storm. So which includes heavy rain and meltwater from hail and snow. तो इसीलिए so it is basically the a very important source of fresh water we can say. ठीक है, so the only major storm water storage facility for the Guwahati city.
So it provides a means of livelihood for a number of local families as well. तो ये 2021 का एक किस्सा है जहाँ पे 6 young girls from the fishing community from Assam only, now they have developed a biodegradable and compostable yoga mat. अब ये जो योगा मैट है इसका नाम बताया गया था मूढ़ेन योगा मैट. अब ये जो नाम है, now this name is basically it is dedicated to the Deepor Beel only, because यहाँ पे जो Deepor Beel है, Deepor Beel में a resident bird of Deepor Beel का नाम है पर्पल मूढ़ेन. तो ये जो मूढ़ेन है जिसे एसएमईज में कहा जाता है कामसोराई, अब ये जो पर्पल मूढ़ेन है तो ये मूढ़ेन के नाम पर ही इसे दिया गया है मूढ़ेन योगा मैट. And Deepor Beel adjoins the Rani Reserve Forest, from where herds of elephant, they come periodically to the forage in the wetland. So they basically come to the wetland for feeding purpose. राइट. सो इसीलिए ये जो दीपोर बिल है इसे काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, बिकॉज सी द वेटलैंड्स, एज आई टोल्ड यू, देयर आर हाउसेस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. देन ऑब्वियस सा बात है द पीपल वुड बी अट्रैक्टेड, द पीपल वुड बी टेकिंग अप देयर ओन एक्सप्लोटेटिव मोटिव्स ऑल्सो, राइट. सो दीपोर बिल हैज ऑल्सो सफर्ड कंटेमिनेशन बिकॉज ऑफ अ गार्बेज डंप ऑन इट्स एज एट द पश्चिम बोरागांव. तो यहाँ पे एक बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है कि जो दीपोर बिल है लार्ज एरिया हैज बीन यूज्ड एज अ यहाँ पे गार्बेज डंप करने के लिए यूज किया जाता है. इट्स वाटर हैज बिकम टॉक्सिक एंड इट हैज लॉस्ट मेनी ऑफ इट्स एक्वाटिक प्लांट्स दैट एलिफेंट्स वुड फीड ऑन. अब देखिए बिकॉज इट हैज बीन यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा गुवाहाटी का जो गार्बेज है क्योंकि यहाँ पे डंप किया जा रहा था, तो दिस इज द रीजन वाई जो प्लास्टिक्स है, तो प्लास्टिक्स एंड द वेस्ट मटेरियल्स हैव मेड दिस पर्टिकुलर रीजन टॉक्सिक इन नेचर. द वाटर ऑफ द Deepor Beel हैज बिकम टॉक्सिक. इट हैज ऑल्सो फॉर डिकेड्स बीन थ्रेटन्ड बाय अ रेलवे ट्रैक. तो देखिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. बेसिकली यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है इसे डबलिंग करने के लिए एंड प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल. तो ऐसे जो मोटिव्स है और ऐसे जो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है, दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, बट देन दिस इज हार्मफुल और दिस detrimental to the various species which basically resides in the Deepor Beel. And also in the southern rim, as I told you, a garbage dump is there, and encroachment for human habitation and commercial use, because we know about the growing population of cities like Guwahati. तो इतना ज़्यादा population के कारण तो यहाँ पे जो because of the population burden, तो यहाँ पे encroachment भी काफ़ी हो रहा है, illegal encroachment, because the people are trying to make settlement in these places as well. If you can look at this map, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है about the 7 national parks of Assam. ठीक है, तो असम में you'll find 7 national parks. You can remember the name. कभी neighboring district से भी या neighboring state से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. And if you look at this Raimona and the Dihing Patkai, now Raimona and Dihing Patkai you should know these are the recent one. ठीक है, Raimona is the 6th national park and Dihing Patkai is the 7th national park of Assam. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच हैज रिसेंटली बीन द न्यूज. तो मैं बताऊंगा आपको क्यों न्यूज में, बट यू शुड नो दैट ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला. तो ये न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली अ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड वेयर अ लोकल मैन वाज अटैक्ड बाय एन एलिफेंट एंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स रेडेड अ फील्ड ऑफ 500 प्लेंटीज. प्लेंटीज आपने शायद सुना होगा, इट इज बेसिकली काइंड ऑफ like banana only. तो यहाँ पे जो elephants है, the elephants they have basically destructed this plains, and also this has been taking place at Wayanad Wildlife Sanctuary in Kerala. ठीक है, so this is the reason why ये जो Wayanad Wildlife Sanctuary, this has been the news. So I have taken up this article from the Hindu, which can be important for our prelims. The location can be important. Often ये जो wildlife sanctuaries है, the national parks से often questions will be asked in the prelims, and also from mains it can be important from GS paper conservation point of view. तो first हम जानेंगे about the human animal conflict के बारे में. अब देखिए ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज नॉट न्यू एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से कंसिक्वेंस ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. बिकॉज पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ता है, द पीपल दे स्टार्ट टू एनक्रोच द प्लेसेस, द शेल्टर्स ऑफ द वाइल्ड, है कि नहीं. तो इसीलिए क्या हो जाता है, ऑफन द पीपल, द ह्यूमन, दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एनिमल्स, राइट. So as you can see in this picture, here is a conflict between human and human and the elephant, right? So about the human-animal conflict, it refers to a struggle that arises when the presence or behavior of the wildlife poses actual or perceived direct recurring threat to human interests or needs, often leading to disagreement between the groups of people and negative impact on the people and or wildlife. You should know that it is very detrimental not just for the humans but for the wildlife as well, because number of lives are lost. Take care, both the lives
lives of human and animals are lost in such conflict. ठीक है, तो ये जो human animal conflict है, now they have become a serious wildlife management problem in Kerala, ठीक है, in the last few years. So people living on the fringes of reserve forests and sanctuaries have a heightened sense of insecurity now. So they basically feel insecure because they feel कि यहाँ पे कभी भी elephants वगैरह आ सकते हैं, उनको उनका जो life है उसे affect कर सकते हैं. अब ये जो human wildlife conflict है, it basically refers to a negative interaction. ठीक है, it is not used in a positive sense. It is mostly used in a negative connotation between humans and wildlife that results in losses in terms of life, property or resources. ठीक है, और यहाँ पे सबसे important aspect आप कह सकते हो कि factor जो है, it is basically because of the expanding human population. ठीक है, तो causes के बारे में it is because of the expansion of the human population, then habitat degradation and fragmentation, then land use transformation. जो यहाँ पे land है, हम काफ़ी तरीके से हम land को abuse करते हैं for agriculture मान लीजिए, या मान लीजिए for livestock, for the cattle rearing, and also for rising densities of livestock in protected areas are considered as the major causes of human wildlife conflict. This is a very major issue. You can also face an essay from this particular area. Now if you talk about the Wayanad wildlife sanctuary के बारे में, तो as I told you, it was located in Kerala and it is an integral part of the Nilgiri Biosphere Reserve. ठीक है, तो Biosphere Reserve is also an important topic for your exam. तो there are 18 Biosphere Reserves in India और 18 में से 12 out of them are part of the World Network of Biosphere Reserve. ठीक है, so ये जो Biosphere Reserve है, ये जो Wayanad Wildlife Sanctuary है, इसे establish किया गया था in 1973 में. So the Nilgiri Biosphere Reserve was the first from India to be included in the UNESCO designated वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ऐसा आई टोल्ड यू, देखिए ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन एवरी बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बट आउट ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो नीलगिरी है, इट हैज बीन मेड फर्स्ट. ठीक है, ये पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है व्हिच हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आउट ऑफ 12. ठीक है, तो अदर वाइल्ड लाइफ पार्ट्स, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, यू विल फाइंड नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्ट. फॉर एग्जांपल मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पाया जाता है तमिलनाडु में, देन बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि पाया जाता है इन कर्नाटका, देन नागरहोल नेशनल पार्क व्हिच इज अगेन इन कर्नाटका, एंड अबाउट द मुकुर्थी नेशनल पार्क व्हिच इज इन तमिलनाडु एंड केरला, एंड आल्सो द साइलेंट वैली व्हिच इज अगेन इन केरला एज वेल. ठीक है, सो ये नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी एग्जाम में ये सारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड नेशनल पार्क है, तो दिस कम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, राइट. और या अगर आप बात करोगे अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में, देन यू शुड नो देयर इज आल्सो वन बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश व्हिच इज नोन एज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व. राइट, अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज स्प्रेड ओवर 344.44 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज कंटिन्यूअस टू द टाइगर रिजर्व्स ऑफ नागरहोल, एंड ये जो नागरहोल है एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड मुडुमुलाई ऑफ तमिलनाडु. सो दिस इज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन टू दिस प्लेसेस ओनली. एंड काबिनी रिवर, ऑफन यू विल बी आस्क्ड अबाउट द रिवर व्हिच फ्लोज थ्रू दिस वाइल्ड life sanctuary or the national park. So Kabini river which is a tributary of the Kaveri river, now it flows to the sanctuary. The forest cover, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे about the flora के बारे में, so it includes the South Indian moist deciduous forest. Deciduous forest आपको शायद पता होगा, there are two types of deciduous forest, एक हो गया moist और एक हो गया dry. So deciduous forests are those forests which shed their leaves in the dry season, all right. And west coast semi evergreen forest भी पाया जाता है. Evergreen and semi evergreen are those which do not shed their leaves, all right, which remain green throughout the year. And plantation of teak, eucalyptus and grevillea. And if we talk about the fauna about this place, then you'll find elephant, gaur, tiger, panther, sambar, spotted deer, barking deer, wild boar, sloth bear, nilgiri langur, then bonnet macaw, and the common langur, wild dog, common otter, Malabar giant squirrel, etc. are major mammals which are found in this particular Wayanad Wildlife Sanctuary. Regarding Kerala only, I have given some information about this particular article. तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया है about the 6 national parks which are found in Kerala. ठीक है, तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल पार्क, आपको ये नहीं पूछेगा कि केरला में क्या क्या है, मतलब आपको ये पूछा जा सकता है, you will be given a name and will be asked कि ये किस स्टेट को बिलोंग करता है. ठीक है, so these are the list of the 6 national park, and this here you can see is in the map of the 6 national parks of Kerala. तो अगर हम बात करेंगे अब एलिफेंट्स के बारे में, विच इज बेसिकली कॉजिंग द कन्फ्लिक्ट इन वायनाड के केस में, तो एलिफेंट का अगर हम यहाँ पे स्टेटस के बारे में बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो एलिफेंट है तो इंडिया में पाया जाता है एशियन एलिफेंट यू शुड नोट इज एंडेंजर्ड. और अगर हम बात करेंगे अबाउट द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट के बारे में, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड अफ्रीकन सवाना एलिफेंट इज एंडेंजर्ड. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द CMS, दैट इज द कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, द एलिफेंट इज फाउंड इन द Appendix 1 and also it is found in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972.
तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the state of Arunachal Pradesh, where the government has decided to hand over 5 terminated or 5 stall hydel projects to CPSU, that is Central PSUs को यहाँ पे hand over किया जाएगा, because जो projects है वो halt पे है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये जो hydel project है इसके बारे में हम देखेंगे. This can be important from our GS paper 3, the renewable energy point of view, because ये जो energy है it will be harnessed, it will be stored, and this can be used and promoted as renewable energy for India, and this has been taken from Arunachal Times. अब जो डिसीजन है टू हैंड ओवर द स्टॉल प्रोजेक्ट, तो ये डिसीजन लिया गया था ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग व्हिच वाज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एट द स्टेट सेक्रेटेरिएट. तो ये ट्यूसडे में एक मीटिंग हुआ था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो जहां पे ये मेजर डिसीजन लिया गया है. ठीक है, तो द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैंड ओवर 5 टर्मिनेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, फ्रॉम, तो दिस प्रोजेक्ट्स वर बेसिकली एट अ हॉल्ट, ये काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए. एंड इनिशियली जो प्रोजेक्ट्स था इट वाज अंडर द इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर IPP, लेकिन अभी के टाइम में so that this projects can be functional, so that they can be made active, so that power can be harnessed to this project, इसीलिए इनको हैंड ओवर कर दिया गया है to the CPSU, that is the Central Public Sector Undertakings. तो the projects to be handed over are 9 यहाँ पे है, then Hirong, Emini, Amulin and Minundan. तो ये 5 projects है जिसको हैंड ओवर किया जाएगा. इसमें से यहाँ पे 2 projects है, that is 9 and Hirong, तो ये projects को हैंड ओवर किया जाएगा तो निपको. ठीक है, and the remaining 3, that is the Emini, Amulin and Minundan will be handed over to SJVNL. ठीक है, तो ये जो कंपनी है बेसिकली स्टैंड्स फॉर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड. तो ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्ट्स विल सी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 crore इन द नेक्स्ट 5 to 7 years. ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे जब कंपनीज को हैंड ओवर किया जाएगा द कंपनीज विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट. सो इट हैज बीन सेड दैट देयर विल बी इन्वेस्टमेंट ऑफ nearly 40,000 crore in the coming days, in the coming 5 to 7 years, and would generate a green power. Now if you add this particular power, 1,000, 500, 500, 420 and 400, if you add this power, if they add the capacities, then it will be summing up to around some 2,800 megawatt capacity. ठीक है, so इतना हम यहाँ पे green power will be able to harness from this particular projects, and it will also provide revenue of around 500 crore per year in free power, because obvious बात है, if it is produced in Arunachal, then Arunachal also will be given a share of it, and around ₹100 crore for local area development as well. ठीक है, अब ये जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यू शुड नो. ठीक है, और अगर हम इसे हार्नेस करते हैं, इट वुड ब्रिंग इन ऑल राउंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया थ्रू मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोविजन सच एज फ्री पावर मिलेगा, देन लोकल एरिया डेवलपमेंट होगा. और ये जो फंड्स जो आएगा डेफिनेटली ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर 100 crore का जो फंड, दिस कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इन रेस्पेक्ट टू हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, है कि नहीं. तो ये सारा केस में हम इसे यूज कर पाएंगे. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again about the state of Arunachal Pradesh, about the festival which is known as the Sarok festival, for which the governor and CM has extended greetings. It can be important for our prelims, directly पूछेगा कि किस community और tribe को belong करता है, and mains के लिए it can be important from GS paper and culture point of view. It has been taken from the Arunachal Times. So Governor B.D. Mishra and Chief Minister Pema Khandu have in separate messages greeted the people of the state on the occasion of Sarok festival. Now सबसे important point यहाँ पे ये है कि जो Sarok festival है, it belongs to the Aka community. ठीक है, so this you can see the picture of the tweet of Pema Khandu, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने विश किया है to the Aka community, alright. और यहाँ पे गवर्नर ने भी विश किया in a separate message, who has basically hoped that the festivity would usher in prosperity, contentment and happiness in the state. ठीक है, तो जो सारोक फेस्टिवल है, it is celebrated by the Aka community in the East Kameng. तो यहाँ पे Aka या इसे कोरो भी कहा जाता है, who belongs to the East Kameng district of Arunachal Pradesh, where they come together and dance wearing colorful traditional attires, as you can see in this picture. It's a topic के basis पर please practice question है, please answer in the comment section. The questions that I asked you in the previous video are this. So let's look at the answers. So the answers for the questions are, so the first question is about the aspirational district program. तो ये जो program है at the union level, it is not implemented by the Ministry of Rural Development, it is implemented by the Niti Aayog. ठीक है, और major loophole in the ranking of aspirational district is that financial inclusion, no, financial inclusion is a part of the parameter. ठीक है, मैंने ये कल के analysis में cover किया था. And the aspirational blocks program announced in the union 2023 is sub-scheme नहीं है, sub-scheme नहीं है, it is based on the ADP
GDP, but it is not a sub scheme. तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे सही नहीं है. And if we talk about the sovereign green bond in India के बारे में, it is done under the Ministry of Finance. And ये जो festival है Shapong Yong Mano Poi Festival, now this belongs to the Singpho tribe. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.